Hello, welcome to Chemistry Buds. Today in this video I will discuss fragmentation of molecule. So in the mass spectrometry, fragmentation plays an important role. So for this fragmentation there are so many probabilities. गोटे मॉलिक्यूल आम जो कन्सिडर करवा से बहुत प्रकार बॉन्ड अच्छी एंड देयर आर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर मे बी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो देयर इन ए मॉलिक्यूल. सो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ fragmentation and ionization at different places. So the probability of cleavage of bond is related to the bond strength, to the possibility of low energy transition, and to the stability of the fragment. ଯେତେବେଳେ ଆମର ବଣ୍ଡ ଟି ଭାଙ୍ଗିବ fragment formation होगा, charged fragment and uncharged fragment. So both the fragment रो stability पर भी depend करेगा. और जो bond breaking पूर्व जो transition state होगा, so the transition state रो energy पर भी depend करेगा. So mass spectrometry रे कौन होची ता प्रथमे molecule ionize करूची और तापर fragmentation होची. So, I mean, the compare kariba the organic chemistry and mass spectrometry. The reactions in organic chemistry generally initiated by the light, chemical reagents, and heat. Okay, but in the mass spectrometry, the reaction is initiated by the ionizing beam. So mass spectrometry deals with the molecules, organic molecules, and the ionizing electron beam. So the mass spectra is otherwise called as the electron impact spectra. Okay. तुम माने पढ़ीच इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा. The electronic spectra कहले हमें UV visible spectroscopy बुझाओ. बट इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट स्पेक्ट्रा कहले दिस इज ए मास स्पेक्ट्रा. द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो द इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट स्पेक्ट्रा एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा दीज आर डिफरेंट. ओके, सो आम जो आयोनाइजेशन कथा प्रथमे चिंता करुचे इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री. से आयोनाइजेशन रो प्रिफरेंस कौन रही गोटे मॉलिक्यूल रे देयर इज ए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रही पारे पाई बॉन्डिंग कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड निश्चित होबार थी उस मॉलिक्यूल रे. सो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल दैट इज ए C डबल बॉन्ड CH2 CHCHOH. So in this molecule, you see here are non-bonding electrons, or we can say this is a lone pair of electrons. Okay, and here it is a pi bond electrons, and here it is a CC sigma bond, and here it is a CH sigma bond. So preferential removal of electron in mass spectra as a result of ionization केमती हम ना प्रथमे हमर जदि इलेक्ट्रॉन रिमूव होबो फास्ट प्रोबेबिलिटी रहउछि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अच्छी C2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होबो. So this is
first probability, and second probability is your the pi bond. Pi bond रे दुटी इलेक्ट्रॉन अछि सेथुरु गोटी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, and third probability is the your carbon sigma bond सेथुरु इलेक्ट्रॉन रिमूव हो, and fourth probability is the CH sigma bond. So in electron removal in mass spectra it is single electron removal, and it is designated as a this the half arrow भाବରେ ताको डेजिग्नेट करा जाए. सो जदि हमर इलेक्ट्रॉन प्रथमे रिमूव हो ऑक्सीजन उपरु, we will get the molecular ion that will be RC dot plus OH, because all each part remains intact, unaffected. This part is affected हो नहीं. So this is the first probability of formation of molecular ion. Similarly, the second probability, इठु जदि गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो ताले कोन हो ना इठु गोटे क्रॉस डॉट फॉर्मेशन हो आ ये pi bond भी वैनिश कर जिवो. So this will give you single bond dot plus CH CH2 OH. Okay. So this is the second probability, and if the electron is removed from C sigma bond, then your third probability will be C double bond C H plus dot C H2 OH. Okay, so this will be the molecular ion. So the molecular ion will decide the further fragmentation. Similarly, if this H will be ionized, this bond will be ionized, then you will get the CH plus dot. So the free radical will be the hydrogen will be removed here. Sorry, the hydrogen is there. The free radical hydrogen will not be removed, but this is the ionization. But formation of this molecular ion, the fourth molecular ion, is the least probable, because the CH bond, CH sigma bond is the most stable. Okay. So let us take another example. Say CH3 CHOH. So here is only the lone pair of electron and sigma bond. So we can get the molecular ion by removal of this electron. So this will give you CH3 CH2OH dot plus, and if this there are two electrons, this bond involves two electrons, so the gote electron is remove hobo ionization time tale kon hobo, and this will give you CH3 plus dot CH2OH. Okay. So the fragmentation hobo ame ethi dekhiba. So fragmentation kon hobo na ame jodi laboratory देखिबा CH3 plus dot plus CH single bond. So एठी जो इलेक्ट्रॉन अछि ए इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट करबो देखिबी ताहले we will get the double bond here, and the fragment will be the CH3 dot plus CH2 double bond OH. Here it will be plus, because the single electron here and the electron here coming from here form the double bond. Okay. So in this way the
fragmentation occurs. Suppose this is the plus charges formed, so there is also possibility of the fragmentation of this bond. So जदि ए बॉन्ड टी माइग्रेट करिवो गोटे इलेक्ट्रॉन एठू से बॉन्ड रू ए बॉन्ड जदि गोटे इलेक्ट्रॉन एठी माइग्रेट करिवो ताल कोन हो नेगेटिव CH3 C H डबल बॉन्ड हो H plus plus H as fragmented radical. Okay, so in this way the fragmented occurs on priority basis. Our molecular ion formation hela pore kemiti fragmentation hobo that will be decided. Okay, and molecular ion formation hoba pai ki bahut prakar probability rohuchi, different point ro electron remove hobo and molecular ion formation hobo. So this fragmentation hobo different rules are there, so many rules, and we will read these rules one by one. Say the first rule is the relative height of the molecular ion chain is greater for straight chain compounds. Suppose we have CH3, CH2, CH2, CH3. So this is a straight chain compound, and its isomer says CH3, CH, CH3, CH3. So the molecular ion peak height will be more for the straight chain and that of the branch chain. So the branching that is अधिका है ताले molecular ion peak the height of mass spectra that will be less, comparatively less, and in some cases due to heavy branching molecular ion peak mass spectra missing thai. So then cleavage is favored at alkyl substituted carbon. So largest substituent at a branch is eliminated as a radical. Suppose हमें previously देखिए हमें देखते थे जे गोटे फ्रैगमेंटेशन रे मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन हैला मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन हैला पर गोटे फ्रैगमेंटेशन रे हमरो CH3 रिमूव होची. ओके, सो CH3 रिमूव होची आ गोटे फ्रैगमेंटेशन रे H रिमूव होची. So this fragmentation is more probable. Okay, a fragmentation टी more probable कौन पाएंगे ना हमारा रूल प्रेडिक्ट करूँगी. Cleavage is favored at alkyl substituted carbons. So alkyl substituted carbon रे cleavage होगा. हाइड्रोजन रिमूवल होगा अपेक्षा alkyl group टी रिमूव होगा. So bulky group जो टी the bulky group will removed as a radical. Okay, so the next rule, that is the double bond cyclic structures, aromatic, heteroaromatic rings stabilize the molecular ion. जदि गोटे मॉलिक्यूल रे डबल बॉन्ड रही बा साइक्लिक स्ट्रक्चर रही aromatic or heteroaromatic rings रही ताहले से मॉलिक्यूल रो मॉलिक्यूलर आयन is relatively stable and increase the probability of appearance of molecular ion. से केस रे हमर मॉलिक्यूलर आयन मास स्पेक्ट्रा रे निश्चित भाव रे अपीयर करिवो. ओके, so the double bonds next is 4 number, that is the double bonds favor allyl cleavage and give the resonance stabilize the allylic carbocation. So the molecule रे double bond अच्छी, so हमें देखते हैं ये double bond टी थी ले double bond को आयोडाइजेशन है माइनस गोटे इलेक्ट्रॉन बाहर जाए थी. So इस double bond रही है ताले so this will be treated as 1
So this is 1 2. The number 2 bond with respect to the double bond is a allylic bond. कौची जदि allylic cleavage हम तामाने यही bond की break करेगा. So already मैं कही सारी जे mass spectra रे जो electronic movement होची that is single electron movement हुए. So single electron movement है लाभ कौन होची ना इसे गोटे दीटा electron अच्छी गोटे bond रे so गोटे electron इठी की shift कला. So already इठी जो ionization है इठी गोटे धारा electron अच्छी. So ये दीटी electron मिसकी गोटे double bond formation करेंगे इठी. अब ये जो R की remove होगा as a free radical. Okay, radical रे remove है जी एटा. So mass spectra detect करिवो कहबो हमर ए जो आयन फॉर्मेशन हेछि ताकू ही डिटेक्ट करिवो mass spectra. So ये जो आयन फॉर्मेशन हेछि these ions are resonance stabilized. Okay, so these ions are resonance stabilized. Resonance stabilized the movement of pi electron and charge also shift from one end to other end and this fragment is stabilized. So double bond thile gote molecule re amar allylic cleavage hobo. So allylic position ko kahili that is the number 2 bond. जदि हमें double bond को 0 धरिबा ता पाख bond को नबा 1 ता पाख bond को 2. So 2 number bond की fragmentation hobo. Okay, so next होची हमर ये 5 नंबर पसिबा the saturated rings tends to lose side chain at alpha bond. Okay, गोटे saturated ring अछि stable ring अछि. So इठी गोटे डबल बॉन्ड रही छि साइक्लोहेक्सिन जेतबे इलेक्ट्रॉन बीम बोmbardment हैला सेटा आयोनाइज कला केमती इठी गोटे डॉट रहिला प्लस रहिला. So this is the molecular ion. So molecular ion हो तार alpha bond रहउछि. So this is alpha bond. This is alpha bond. से alpha bond को गोटे इलेक्ट्रॉन इठी के माइग्रेट करूछि आ गोटे इलेक्ट्रॉन एटा साइक्लिक माइग्रेट करूछि. तो हमें एते बडे ये इलेक्ट्रॉन की इठी के आसिला we will get a free electron and when this bond to गोटे इलेक्ट्रॉन इठी माइग्रेट करूछि here is another electron. So these two overlap to form this ethylene molecule and formation of ethylene molecule is it is a neutral molecule and it is quite stable. So this fragmentation happens and how this charge appears here this ion. So इठी गोटे इलेक्ट्रॉन थिला इठी गोटे इलेक्ट्रॉन मूव करछि. So इठी दुईटा इलेक्ट्रॉन रहला. So इठी गोटे डबल बॉन्ड हैला. अगेन इठी पॉजिटिव चार्ज रहिछि आ इठी गोटे इलेक्ट्रॉन रहिछि. So हमें एटा को ओवरऑल रखिबा या ऊपर ए मॉलिक्यूल ऊपर इठी डबल बॉन्ड रहबो नाही. तबे डबल बॉन्ड रखिबा ताहला हमें इठी पॉजिटिव चार्ज गोटे डॉट दबा इठी रखिबा. यदि पॉजिटिव चार्ज न रखिबा ताहले कोन होबो ना इठी पॉजिटिव चार्ज रहबो इठी dot rahebo. Okay, so and this type of reaction is called retrodiasalder. Diasalder reaction. Okay, so the reverse होची यदि हमर diasalder reaction कहले. So this is the diasalder reaction. Okay, डायल्साइडर रिएक्शन तार पहले कोन हो नामे पाइबा ए जो साइक्लोहेक्सिन साइक्लाइजेशन हम तार रिवर्स होछि हमर रेट्रोडायल्साइडर रिएक्शन. So I hope this video is helping you in studying the mass spectrometry.